Welcome everyone to Developer Gaming. We are having the episode 2 of Hogwarts Legacy. Baby, it really hurts sometimes, but it's the only thing that I ever love. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. We'll be playing this game with Assuming it is controller not too busy, this you time. might even meet Sirona, the honor. Let's see. She is a charming Okay. hostess and a powerful witch. Controls totally changed. Good one to know. It's fine. This is aim. Okay. X button is the interaction. Okay, that's nice. Oh. Hmm. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You Her be voice well. is so manly. Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer.
Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Taught me to keep my wand at the ready. And the odd Find chuck myself of home at night these days. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs Is like this Rookwood and game all Harlow. about the I want to cutscenes? understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Select the Hogwarts, but proceed to Hogwarts. Is this the common room? No. Looks like this is. Oh, that's how you do it. Okay. It's not easy to understand the controls. It's different in the keyboard, and then it's different in the controller. I might need to practice the spells again.
Okay. Which one is Leviosa? That's not Leviosa. RT. Oh. So basically, how can I turn back the controls? You are not currently tracking anything. Got it. What's this? Oh. Okay. Talk to Professor. Revelio. Okay. How can I run now? You cannot win, but don't be shy, for I can't wait to watch you try. Slow coach! Slow coach! Handy resource indeed, your field guide. Life seems rather dull in the hamlets around here. I'd much rather live in a big... Ow. Now I get. Come now, Annabelle. It was a long time ago. You made your point. Get away from me. Whee! What's this? Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you, Praxia Mole? Why is this so big? I remember that music. Just like the Harry Potter one. Lumos. Oh, that's the button. Okay, finally. Now it makes sense. So this is the dodge button. The up arrow is to dodge. The O is this parry. X button is to jump. And square. It literally does nothing. Okay, let's talk to him. Professor, This is X button, interactive I'm glad buttons. to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir,
The trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. That's the thing. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. What are you up to now? हेलो अभी क्या हाल चाल? इसमें कोई हैरी नहीं है ज़्यादा मुझे याद है. क्योंकि ये लेगेसी है तो मेरे ख्याल से इसमें हेडमास्टर स्नेप या फिर क्या कहते हैं डम्बलडोर वगैरह कोई भी नहीं है. ये टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. Let us keep our heads about this. It was an accident. मुझे स्टार्टिंग से इसको कंट्रोलर से ही खेलना चाहिए था. मच बेटर रहता. आधा से ज़्यादा. I believe we have some things to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me.
then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems Crossed Ones isn't as secret as it's believed to be. Revelio. कुछ तो करना है इसमें। नीचे जाना। Nice to see you, my young friend. Might some kind soul help me? इसके लिए तो 2080 Ti चाहिए। नहीं, 5090 Ti चाहिए इस गेम को फुल रेजोल्यूशन चलाने के लिए। Go. Yes. हाँ ये नहीं है। Glad you could make it. Lucan's just over there. Reparo. Lumos. Reparo. Nice. Can I help you? That's it? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for Crossed Ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does Crossed Ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in Crossed Ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the Spectacular. fireworks begin! We'll make you regret signing up. Oh, okay. Lumos. Expulso! There goes one. Find the one! Act like a winner! Some big hits that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Ones training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up.
Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well Thank fought. you. It was nothing. Hope to see you back here again. Okay, win 2 rounds. Glad you're back. That means I need to win another one. Hello, Ready? Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Keep trying. Lumos. You'll get it. Nicely done. That's it. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I am. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Let's do it. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. 3 versus 2. Like a winner. Lumos. The one. Lumos. That's all you've got? Oh, we're defeated. Oof. Oh, Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? of course. I'll give it another go. Glad to hear it. Not gonna lose. Another. Oh.
getting used to it now. Well done. Whoever you are, well done. Bravo! I gave it my all. Bravo. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Okay. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. It's really easy to play in controller. Da, 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 da. Open. Open sesame. Run. Run like you mean it. Oh. If only a new student would help. It is. I trust Mr. Brattleby was able to... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. As you wish. Concentrate, and keep your wand steady. Okay. A button. Simple. Incendio. Good work. This is Incendio, huh? Here, I think. Back. Nice. Whoa. Revelio. I will get a new magic. I will burn down everything. I will burn the entire Hogwarts. Starting from this here. Can I burn this? Come on, burn him. Okay, leave him. Ah, there you are. She always wakes up somewhere. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat.
So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. What kind of headmaster he is. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. So many cats. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? This game is Hogwarts Legacy. Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? और ये बहुत ही बढ़िया है. अभी तक तो बढ़िया ही लग रहा है. ended up there after the dragon attack. बस इसको फुल क्वालिटी पे जब कोई खेले तो ही मजा आ सकता है. वैसे मजा नहीं आएगा. Portkey to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. मेरे ख्याल से तो बहुत ही बढ़िया गेम लग रही है. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. ये गेम similar to. Probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Genshin Impact कह सकते हो. Thank Similar you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. बताओ क्या पूछना? Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. ओह क्या जगह है ये. Damn. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. PS5 गेम स्ट्रीम कर. I can be sneaky. Let's go. PS5 की गेम स्ट्रीम करने के लिए कैसा लैपटॉप चाहिए? लैपटॉप में नहीं चलेगा. The disillusionment charm. Good for PC getting बनवा places PC. you're उसमें not चलेगा supposed PlayStation to गेम be. सारा. Cast it and Adarsh you'll hear Marthe. as little Hello. more than a trick of Welcome the to light, the stream. just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. पहले मैं It's सोच not रहा as था लैपटॉप foolproof लेने as की, a फिर मेरे cloak. को याद है नहीं. Those are expensive. And गेमिंग spells, सिर्फ पीसी में होती है. spells are free. लैपटॉप उसके बराबर Give बिल्कुल it a नहीं. try. And you won't be able to upgrade. अगर जैसे मान लो मिल जाएगा 70,000 रुपये में ऐसा लैपटॉप तुमको मिल जाएगा जिसमें सारी चीज़ें तुम्हारी चल जाएगी. बट अगर तुमको कभी लगा कि मुझे अपना ग्राफिक कार्ड यार मेरा सूटेबल नहीं है, अब इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो तुम कुछ नहीं कर सकते. तुम्हें दूसरा लैपटॉप ही लेना पड़ेगा. लिटरली जो जीपीयू है तुम्हारे पास तुमको वही चलाना पड़ेगा जीवन भर. पीसी का क्या है, तुम्हारा जब मन किया पुराना ग्राफिक कार्ड सेल कर दो, नया वाला ले आओ. एंड इट वर्क्स गुड, वेरी गुड. लैपटॉप में ही नहीं होता है. लैपटॉप में जो है वही घिसो.
और लैपटॉप में से सोचा 4 GB ग्राफिक कार्ड, 6 GB ग्राफिक कार्ड होता भी नहीं है उतना। ये क्या हो रहा है? अच्छा, यू वर्कआउट, ओके। मुझे छुप छुपा के जाना है। लैपटॉप में इन्वेस्ट करना टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। अगर गेमिंग के लिए ले रहे हो तो फिर लैपटॉप बेकार है। लैपटॉप तो सिर्फ प्रोडक्टिव कामों के लिए होता है, अगर कभी जाना हो तो, और उसका कोई काम नहीं है। गेमिंग के लिए लैपटॉप नहीं है। छोटी मोटी गेम करनी है, स्ट्रीम वगैरह, तो ठीक है। PS5 के लिए बिल्कुल है। बेफालतू लो क्वालिटी में चला हुआ गेम, फायदा क्या? ये सब लोग तो अलर्ट हो गए। Whoever's there, you are most certainly up to no good out in the castle ओके, now. Be on your way. बच्चे कैसे हैं? तो बहुत सारे लोग हैं। ऐसे इतना इजी है, लग नहीं रहा है इतना मुश्किल है। चलो देखते हैं। एक बंदे से तो कैसे बचना पता चली है। विंगार्डियम लेवियोसा करना है और कुछ नहीं। मारो सबको। फिलहाल तो बचना। No, I want to stream while playing PS5. So अगर मुझे PS5 स्ट्रीम कैप्चर कार्ड से स्ट्रीम करना हो, उसके लिए डिवाइस चाहिए होगा। अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो लैपटॉप कर सकते हो कंसीडर। अगर गेम भी उसी में खेलना है तब तो फिर अलग मैटर है। कैप्चर कार्ड से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें जिस डिवाइस की एफिशिएंसी यूज़ होगी वो तो खैर तुम्हारा प्ले स्टेशन ही होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अबे अबे, ये औरत चाहती क्या है भाई? ऐसे बच के निकल नहीं सकता क्या मैं? अगर मैं यहाँ से कूदना चाहूँ मैं बाई चांस, एम इससे होता है क्या? Is someone sneaking about? ओह ओह भाई साहब, रिंगार्डियम लेवियोसा करना है मेरे को। रिंगार्डियम लेवियोसा कर देगा इसके ऊपर। ओ ओ मैं तो छुप जाऊंगा, ये दूसरा बंदा कैसे करेगा? दो बंदे और भी तो है ना उधर। प्रॉब्लम तो यही है सारी। PS5 में ही गेम करनी है। सो हाउ लैपटॉप रिक्वायरमेंट। लैपटॉप तो देखो कोई सा भी फिर चलेगा, क्योंकि तुमको वैसे कौन सी क्वालिटी में स्ट्रीम करना है तुमको? 2K रेजोल्यूशन, 4K रेजोल्यूशन, या फिर जस्ट 1080p में? उस पर डिपेंड करता है कि किस रेजोल्यूशन में करो। अगर तुमको सिर्फ 1080p करना है तो लिटरली तुम कोई सा भी लैपटॉप ले लो तो चलेगा, नॉट अ बिग इशू। किसी भी लैपटॉप में 1080p किया जा सकता है। अगर तुम्हें 2K रेजोल्यूशन में चाहिए तो तुम्हें एटलीस्ट फिर लेना चाहिए एसस टफ गेमिंग सीरीज में से ले सकते हो कोई सा भी। वो थोड़ा 50 to 55,000 में ऐसे में लैपटॉप मिल जाता है। और फिर अगर तुम्हें 4K में रेजोल्यूशन करना है तो तुम्हें लीजियन की तरफ जाना चाहिए, या फिर LOC के LOQ के जो लैपटॉप होते हैं जिनमें लेटेस्ट जनरेशन की GPU है। Quick, behind the bookcase. RTX की जो सीरीज़ है ना, 40 सीरीज़ में, या फिर जो
50 सीरीज में जो लैपटॉप सभी आ रहे हैं You told me the librarian would be gone वही by सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। I said usually, but it'll still be alright. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. No problem. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. वो इसके पास भी अदृश्य चोगा है। ये तो बढ़िया है। The key. Here it is. ये क्या हुआ? Is someone there? Is that you, Peeves? Gracious, what a mess! हैं? ये आंटी ने कैसे पकड़ लिया? अच्छा अभी तो मिल गई थी। कहाँ है कर्सर? ये तो सही है, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा कर्सर भी मूव होता रहता है। शाइनी शाइनी एनिमेशन। Is someone there? The library is no place for larking about. Jump covered in the Once. top 5 best games on top 5। मेरे ख्याल से तो सबसे जो बेस्ट गेम मुझे लगती है वो है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। देन उसके बाद मुझे सबसे बढ़िया गेम लग रही है, सिर्फ पीसी की पूछ रहे हैं ना वैसे, जो मतलब पीसी पे खेला जा सकता है। वैसे गॉड ऑफ वॉर प्लेस्टेशन की गेम है बट फिर गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक विल बी माय फर्स्ट चॉइस। 2018 गॉड ऑफ वॉर विल बी माय सेकंड चॉइस। फार क्राई Is that you, Peeves? विल बी माय थर्ड चॉइस। फार क्राई के अलावा देन रेजिडेंट इविल विलेज जो है मेरे पास, वो I knew I heard someone. Out with मेरी you! फोर्थ चॉइस रहेगी। और जो फिफ्थ चॉइस है, फिफ्थ चॉइस वर्ल्ड वॉर जी, वो रहेगी। इससे बढ़िया गेम्स फिलहाल तो मैंने अभी तक नहीं खेली है। सबसे बढ़िया मेरे को ये गेम्स लगे अभी तक तो। फुल टू एक्शन एडवेंचर दोनों तो एक साथ। The library is no place for दृश्य larking चोगा कैसे about. पहनते हैं? At once. पहले तो उसने पहन लिया था दृश्य चोगा। कौन सा बटन दबाना पड़ता है? चलो ट्यूटोरियल देखते हैं। इसमें ट्यूटोरियल बहुत बढ़िया दे रखा है। शुक्र है ट्यूटोरियल, नहीं तो मैं तो कुछ पता ही ना चलेगी मतलब करना क्या है, क्योंकि मैं डायलॉग्स को ध्यान दे ही नहीं रहा अभी। Revelio. ये देखो इसने यूज कर लिया ऑलरेडी। अनचार्टेड 4 मैं सिमिलर टू अनचार्टेड गेम खेली हुई है वैसे। अ गेम सिमिलर टू अनचार्टेड, जैसे टॉम राइडर जो होता है, लारा क्राफ्ट वगैरह, तो मैंने खेली हुई है। अदृश्य चोगा, बिना दृश्य चोगे के तो हो ही नहीं सकता है। ये क्या है? ओह ये एबिलिटी मुझे चाहिए होगी, इसे कहाँ रख सकता हूँ मैं? इसमें जब भी मैं सोचूं यूज क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे पास थे ही नहीं है। ओके Here it is. अगर फिर मैं ऐसे कोई गेम जो मैं विश लिस्ट में रखता हूँ, जो मतलब मेरे को खेलने चाहिए, वो असिस्टेंस क्रीड तो कहना चाहूँगा। असिस्टेंस क्रीड हो जाएगा, अपना प्रिंस ऑफ पर्शिया, ये सारी गेम्स ऐसी है जो मैं खेलना चाहता हूँ।
साइलेंट रीमेक, साइलेंट हिल रीमेक, अच्छा हॉरर में। अरे हॉरर गेम्स तो मैंने बहुत खेली, कमला ऐसे खेली है। ये अदृश्य चोगे में आंटी ने मेरे को देख लिया। अनपॉसिबल। यूएन वाला पॉसिबल, अनपॉसिबल भाई साहब। चलो एक चीज तो ठीक है, कुछ चीजें वी आर गेटिंग। हाउ टू यूज एबिलिटी ये तो क्लियर हो गया। चलो फिर अदृश्य चोगे का मतलब क्या है? आफ्टर गॉड ऑफ वॉर लाइक हॉरर गेम्स। हॉरर गेम्स की बात ही कुछ और होती है। Someone there? Is that you, Peeves? इसमें जंप स्केयर्स होते हैं, वो उनकी बात अलग होती है। रेजिडेंट इवल से बढ़िया जंप स्केयर तो किसी में हो ही नहीं सकता। कभी भी कुछ भी ज़ॉम्बी फॉर्म में आके टपक जाता है वहाँ पर, और जब वो आता है तो जो म्यूजिक बदलता है तो दिल दहला देता है एकदम। आंटी मेरे को नहीं देख रही इस टाइम, बट आंटी की रातें एक भी नहीं लग रहे मुझे। नहीं, मैंने फेयर की सीरीज में से एक भी नहीं खेला अभी तक। ये कैसे हुआ? अच्छा मतलब एबिलिटीज को यूज करें अगर तो ये गायब हो जाता है। That wasn't so difficult after all. Now, find that. ओहो अल्लाह मोरा, बट उसने बोला नहीं कुछ भी अल्लाह मोरा के बारे में। ये कौन सा विशांति का ग्रंथ है क्या? और ये तो विशांति का ग्रंथ है, डॉक्टर स्ट्रेंज इसी को ढूंढता है। Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. ऐसा क्या? नीचे जाना है क्या? हाँ नीचे जाना है। ये क्या किया इसने? अच्छा अगर किसी जगह पे फायर करे तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। Ghost, don't let her see you. आत्माएं घूम रही है भाई। ट्रेस करते हैं, ट्रेस। मुझे इनसे बचना है। हाउ अननोइंग। आत्माओं से बच के भला क्या करेंगे हम? मत देख मत देख मत देख मेरे को मत देख। मैं ही देखा। Should be in the clear now. For us to be skulking about. Very nice. So what is it you've been looking for? This game also I'm looking for have a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. horror masala. Because ऐसा Merlin क्या? knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right इससे now. बढ़िया Let's ट्रैकिंग focus on एनिमेशन मैंने Aurora. किसी गेम में देखा। Which is what? ये लिटरली precisely? पाथ बताता है इस तरीके I'll know it when I से। see ऐसा it. जेंशन इम्पैक्ट की गेम You're में भी है, being बट awfully cryptic. कितना बढ़िया बनाया है। 3D में मूव कर रहा है। वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स किसी भी गेम में जो देखा मैंने। ए ओ ये काटने वाली किताब है वही हैरी पॉटर की पार्ट 3 में था, प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में। उसका जूता गिरता है, जूता भी खा जाता है एक बंदे का। तो मेरे ख्याल से अब बचने की जरूरत नहीं है। चलो भागते हैं। अगर कोई बचने की जरूरत पड़ी तो मैं इमीडिएट उसी बटन पे हाथ रखा हुआ। इनको घुमाने से होता क्या है?
है वहीं। ओ शेल ग्रे। ओके मुझे पता है इसके लिए क्या करना है। Have we here? Sebastian Solo and his new little ये तो जोकर है। friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. क्या यार इसमें वोल्डेमॉर्ट आएगा? Peeves, don't I'm you... going to tell. इसमें सबसे बड़ा एनिमी मैं सोच रहा हूँ किस टाइप का होगा, कौन होगा इसका सबसे बड़ा वाला एनिमी? Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. हाँ I don't want you इसकी getting into टाइमलाइन trouble अलग for है। me. यहाँ तो ये I बहुत have a ज़्यादा way with the पुरानी है faculty when it अकॉर्डिंग comes टू to वोल्डेमॉर्ट के। disciplinary matters. यहाँ तो उसके बहुत Besides, बाद की कहानी है। I like having friends who are in my debt. ऐसे इसका नाम Now लेगेसी go. है, तो इसका Good मतलब luck in ये your पुरानी search. टाइमलाइन के बारे में। Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. आई नो, बट इसको स्विच कहाँ से करते हैं? ओ यहाँ से करते हैं। नाइस। ये है रिपेयरो, नहीं ये है रिपेयरो। इसको हम फिट कर देते हैं फिलहाल लेवियोसा की जगह पर। Lumos. हाँ अबे मैंने तो रिपेयरो लगाया था, कहाँ गया? हाँ जी आप ज़रा आप यहाँ पे आ जाएंगे? आ गए, चलिए जी। अब इसका सबसे बढ़िया यूज़ मैंने देखा है हैरी पॉटर के वो वाले पार्ट में, प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में, जब वो किसी के घर में आते हैं, प्रोफेसर हॉरस लग्हॉर्न को अपने दल में, मतलब एज अ प्रोफेसर वापस से हॉगवर्ट्स को बुलाने आते हैं, तो उसमें वो एक घर में छुपा हुआ होता है जिस घर को पूरा तोड़ फोड़ रखा होता है उन्होंने। तो फिर जो डम्बलडोर होता है ऐसे स्पेल का इस्तेमाल करके पूरे घर को ठीक कर देता है। क्या ही सीन होता है वो। पता नहीं छुपने की क्या जरूरत है, लेकिन चलो छुप जाते हैं। ये ऊपर से कहाँ जा रहा है? अच्छा मैं ऊपर से भी पूछ सकता था। नहीं बकवास है। Of course. Traces of ancient magic. नहीं इतना प्रकाश होता है यार, ये बड़ा अजीब सा दिखता है। ये कहाँ आ गए हम? अपने आप ही। वो तो गॉड ऑफ वॉर की तरफ क्रिएट खोला इसने भी, क्या बात है। बस इसके पास एक छोटी सी लकड़ी है। Where might this lead? वॉन्ड। वो एंट्री हो गई है कुछ खतरनाक जगह पर। लेट्स गो। तहखाने में आ चुके हैं, रहस्यमय तहखाना, हॉगवर्ट्स लेगेसी एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। विसेज नहीं एक मूवी है नक्शा नाम से, ठीक है, तो उसमें भी कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ सामने ब्रिज नहीं दिख रहा होता, रास्ता होता है लेकिन, तो उसमें एक डायलॉग है, जब भी तुम रास्ते से भटक जाओ और सामने अंधकार नजर आए तो ईश्वर का हाथ थाम कर कदम बढ़ाओ और रास्ता तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। बट ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कुछ होने वाला है, मर जाऊंगा। Ah, I need to wake up that rune over there. Wake up, like wake up करना उसको कैसे? I Wake wonder up if I can कर hit the rune with a spell. LT to aim। विंगार्डियम लेवल, ये वाला कर सकते हैं मैं? नहीं बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है ये। Yeah, we are getting things. But एकदम सेंटर में होना चाहिए।
हो गया। आओ, ये भी ठीक है। Not surprising. Guards at the ready. कुल मिला के इसमें दिमाग यूज नहीं करना पड़ा मुझे अभी तक। लेफ्ट भी आर भी ठीक है भाई, ठीक है भाई। इसमें कुछ तो शॉर्टकट वगैरह करना कह रहा है। इसमें स्पेल्स का जो वो है ना, आरबी, मैं गलत बटन दबा रहा था। मैं ये सोच रहा था इसको सीधे उठाए कैसे फेंकते हैं। अरे चचा, अब तो सीख गया मैं खेलना। जो वहाँ पर ये जो बोतल पी के हील कर रहा है, ये सीन पता किस में देखा मैंने? ये वुकोंग में, ब्लैक में वुकोंग। अरे पंगा लोगे। हैरी पॉटर की दादी है शायद ये जिसका जिक्र कहीं पे भी नहीं है। इसका हर स्पेल पितृदेव संरक्षण में होता है, दूसरों के लिए जो दोस्त है, बाकियों के लिए तो दक्षिण मरणासन ही है। रिपेयरो? वाई रिपेयरो? आई डोंट नीड इट। बच गया रे माँ बाप। ओह बहुत बढ़िया। दूसरा कहाँ गया? वो भी कूद के मर गया क्या? बढ़िया, सुसाइड कर लेना चाहिए इन लोगों को ऐसे। इससे एम होता है और इससे फायर। अच्छा, एक ही बार गोली चलानी होती है? मैं बार बार ओह गलती हो गया रे बाबा। कई बार ही चलाना पड़ता है, इसीलिए वो रुका रहेगा। यहाँ तो ये ब्रिज थोड़ा डिफरेंट किस्म का है, चलो देखते हैं थोड़ा। अच्छा, ये ऐसे चल रहा है सिस्टम्स का। जब तक ये घूम रहा है तब तक तो ठीक है। ट्रिकी तो है। हाँ, ये मोमेंट था जब मैं जा सकता था। It's now or never. पता नहीं कैसा तुक्का चल गया। मतलब थोड़े थोड़े सेकंड्स के गैप में फायर करना है ताकि वो ब्रिज टूटे दोबारा बन जाए। जब तक मेरे क्या लिखा जो मैं पहुंच गया। To where? यहाँ पर मैजिक भी काम नहीं कर रहा। नहीं, मैजिक काम कर सकता है ना अगर मैं मैप ओपन करूँ। मैप किससे आता है? मैप इससे आता है क्या? ये तो कुछ और ही है। मैप who cares? We don't need map। जब आएगा तब देखा जाएगा। खैर चलो उस पर फायर करते हैं। जितना हमको आता है वो तो करें पहले, ठीक है। ये बीच में से ऑलवेज जॉइंट रहता है ना, जब मैं दोबारा फायर करूंगा तो ये हाफ ब्रिज दोबारा क्रिएट करेगा। मेक सेंस। गॉड ऑफ वॉर 3।
क्या गॉड ऑफ वॉर 3? भाई आपने गॉड ऑफ वॉर 3 RCPS 3 में खेली थी? हाँ बिल्कुल, मैंने RCPS 3 में ही खेली थी वो। अब कलेश होगा, पर जब Nearly तक तुम there. पार हो जाऊंगा। Best keep my wits about me. यस, उसी में ही तो चलती है। तो प्ले स्टेशन 3 में कोई वो गेम खेल के स्ट्रीम कैसे कर सकता है? उसमें तो कैप्चर कार्ड भी सपोर्टेड नहीं था। यहाँ पर तो 6 एनिमीज है, मैं देख सकता हूँ क्लियरली एकदम। अरे मुझे वो नहीं तोड़ना चाहिए था, उसको तो फेंक के मारना था। पीसी के लिए ऑप्टिमाइज कुछ गेम तो असल में RCPS 3 ना बहुत बढ़िया एमुलेटर है, उसमें प्ले स्टेशन की वो 100% कंपैटिबिलिटी उन्होंने बना रखी है। बट कुछ गेमें ही ऐसी है जो कंपैटिबल है, मैटर ये है सारा। आउच। ये मैंने कैसे किया अभी? अरे बाबा रे, ये तो मैटर ही कुछ गंभीर था भाई। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये चीज तो बड़ी अच्छी थी, और लाइटनिंग क्रश हुई थी 1-2 बार। नहीं, क्रैश कभी नहीं हुई वो। शुरू में जब मेरे को पता नहीं था ना सेटअप वगैरह के बारे में, तो उसका ना FPS बस कम आता था कभी कभी। फिर जब मैंने उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कर दी, फिर वो सही हो गया था। उसका फिर मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। और ज़्यादातर टाइम में वो 60 FPS कांस्टेंट चला है एकदम। ये मैं कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ पावर्स को? ये जो चीज़ है ना, कैसे यूज़ करते हैं इसको? वो हो नहीं रहा। मेरे ख्याल से पावर ना लिमिटेड होती है। बिजली कड़काने वाली क्या पावर थी यार वो तो, कसम से। थोड़ी देर के लगा इसके हाथ में मेल नहीं रहा, तो थॉर वाली पावर यूज़ कर दी एकदम। इसका तो फिर दोबारा से रिप्ले ज़रूर देखूंगा मैं। मैं वही सोचू यार, इतनी हाइप्ड गेम है, प्ले स्टेशन 5 के लिए एक्सक्लूसिव आई है, ऐसी गेम है। माना लो ग्राफिक पे खेल रहा हूँ, गलती मेरी है, बट फिर भी यार BGMI भी तो लो ग्राफिक पे खेलते हैं ना, कितनी अच्छी लगती है HDR में। खैर दुनिया अलग है, क्या कह सकता है। और हमारे में गेम क्रैश होता था, और सम बहुत ज़्यादा गेम प्रोसेस करने के लिए बार बार मैं ऐसे प्रॉब्लम आता था, री इंस्टॉल करना पड़ता था। नहीं ऐसा री इंस्टॉल क्यों करना पड़ेगा? देखो सिंपल सी बात है, जो गॉड ऑफ वॉर 3 है RCPS 3 के साथ जब एमुलेटर के साथ चलती है, तो उसका वो बहुत ज़्यादा CPU इंटेंसिव गेम बन जाती है। वो तुम्हारा GPU प्रॉपर यूज़ नहीं करता है। सच बताऊँ तो तुम ग्राफिक कार्ड कितना भी महंगा ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा प्रोसेसर पावरफुल होना चाहिए। वो गेम मैं पहले भी चला चुका हूँ एक बार, मेरे पास तब भी सेम यही ग्राफिक कार्ड था, बट वो गेम इतनी लैग करती थी कसम से। मैक्स 25 FPS एंड 20 FPS पे चलती थी वो गेम, गॉड ऑफ वॉर 3 रीमास्टर्ड। मेरे पास पहले था i5 9th जनरेशन प्रोसेसर, और सेम यही GPU 1060 6GB वाला, बट नहीं चलती थी। अभी मेरा प्रोसेसर अपग्रेडेड है और रैम अपग्रेडेड है, तो अब 60 FPS कॉन्स्टेंट पे खेली है मैंने वो गेम ऑलमोस्ट। कुछ जगह आती है जहाँ पर कंपाइलिंग शेडर वाला आता है, बात जहाँ पर कंपाइल हो रहा होगा ना शेडर, उस जगह का एक्सेप्शन है बस। उसके अलावा बाकी कोई सी भी जगह ले लो तो 60 FPS कांस्टेंट पे चला है वो एकदम, कितने भी तगड़ी फाइट हो रही है चाहे। तो वो CPU इंटेंसिव है, उसमें CPU के अंदर ज़्यादा लोड डालता है वो। तुम्हारा प्रोसेसर अच्छा है, तुम लिटरली 2 GB के ग्राफिक कार्ड हो ना तुम्हारे पास अगर, तो भी चल जाएगी मस्त। प्रोसेसर दमदार हो, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमुलेटर्स जो है वो GPU यूज़ नहीं करते पूरी तरह से। तुम चाहे उसमें सिलेक्ट कुछ भी कर लो, रियलिटी यही है कि प्रोसेसर का ही वो ज़्यादातर यूटिलाइजेशन करता है। मैं उस गेम को लिटरली
मैं पता अभी जो मैं फेस कैम यूज़ कर रहा हूँ इसमें ना एक ब्लर करने वाला सॉफ्टवेयर प्रिज्म लाइव स्टूडियो भी मैं यूज़ करता हूँ। वो मैं भी यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं उसको लगा दूँ ना मेरा कैमरा अटकने लग जाता है, क्योंकि ये जो गेम है ये इस टाइम जीपीयू यूज़ कर रहा है मेरा, और प्रिज्म लाइव स्टूडियो का जो ऐप है वो भी जीपीयू यूज़ Wanted to करता है। see me? तो I भाई have साहब Mistress Fitzgerald. दोनों चीज़ें Professor का साथ में Rackham. चलाता है ना, मेरा कैमरा लैग This करता है, is the इसलिए मैंने door, बिना फिल्टर के लगा Morgana. रखा है। Welcome. i3 Professor 6th Rookwood. जनरेशन में Professor Bakar. We understand मेरा that you are ऐप adjusting कोई well to life एमुलेटर at Hogwarts. कम नहीं करता। I i5 am. 6th जनरेशन बहुत ही पुराना I हो am गया ना, glad. i3 है वो भी बताओ। Especially in light of your i5 6th unusual जनरेशन में तो भी कुछ situation, कह सकते starting थे, as a 5th year. i3 As तो it बहुत ही ज़्यादा happens, पुराना हो गया। I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morgana, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I जहाँ recognized तक you all मैं देख रहा हूँ ना immediately. सिचुएशंस अभी, Can't thank you enough for what you did. We were एक glad to बॉटलनेक help. नाम का टॉपिक And होता है yes, I आईटी में। did see swirls of magic सीपीयू everywhere that बॉटलनेक, day. जीपीयू बॉटलनेक, My ये दो father चीज़ें ऐसी होती insists हैं। it was my इसका मतलब ये imagination है running कि wild, आपका but it was जो certainly real to me. It was सीपीयू not बॉटलनेक your का मतलब ये होता है कि imagination. आपका जो First of जीपीयू all, है वो एकदम ओवर हाइप्ड Professor है, Rackham can उसको see them चाहिए too, बहुत सारा फीड but we काम have करने never के लिए, known of लेकिन another आपको who could. प्रोसेसर उसको दे नहीं पा रहा है। I तो don't सीपीयू जो है understand, 100% but यूटिलाइजेशन पे जाता रहता है बार The बार, तो whispers उसको or पूरी प्रोवाइड नहीं कर traces पाते that चीज़ें, appear when तो उसे a सीपीयू बॉटलनेक particular कहते हैं form of ancient कि magic वो is पूरा wielded. यूटिलाइजेशन हो रहा है लेकिन पूरा ancient अपना magic. डेटा नहीं दे पा रहा, जितना Few जीपीयू are मांग रहा है enough उतना प्रोसेस capable नहीं कर of पा रहा, तो wielding उसे it. सीपीयू बॉटलनेक कहते हैं। Hogwarts सेम ऐसा itself जीपीयू is a बॉटलनेक में होता है stronghold of कि आपका ancient प्रोसेसर और magic. रैम जो है वो बहुत सारा So फीड if दे रहा I है, can 6 जीबी see पर सेकंड के traces हिसाब of से गेम ancient का डेटा magic, does प्रोवाइड that कर mean रहा I can है, wield it लेकिन आपका too? ग्राफिक कार्ड उसको हैंडल नहीं कर With पा the रहा। proper training. दैट्स कॉल्ड जीपीयू Let us not बॉटलनेक। get ahead of ourselves, तो Miss Morgana. जब आपका सिस्टम आप बिल्ड Before कर I दो ना, can आपको train मेक you to श्योर करना wield होता है कि such आपका magic, सीपीयू, जीपीयू you और must रैम first तीनों master आपस में all that कंपैटिबल होने चाहिए। Hogwarts has to offer. अगर जैसे मैं i5 14th जनरेशन A यूज़ कर magic रहा हूँ, this लिटरली powerful लेटेस्ट can do जनरेशन से great जस्ट एक harm in the जनरेशन wrong पुराना है। hands. It must be 32 जीबी wielded का by a DDR5 select रैम few. यूज़ कर रहा हूँ, 6000 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे चलता है, Respectfully ask that लेकिन you मेरा not जीपीयू speak to 1060 है। anyone about what we have discussed here नहीं तो today. इस गेम को मैं मैक्स क्वालिटी में खेल सकता हूँ। मेरा सीपीयू और रैम में कैपेबिलिटी है, मेरा सीपीयू और रैम केपेबल है कि मैं इसको अल्ट्रा क्वालिटी पे खेल सकता हूँ विद रे ट्रेसिंग वगैरह ऑन सब कुछ, लेकिन अगर मेरा जीपीयू साथ नहीं देगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा जीपीयू बॉटलनेक हो रहा है इस टाइम, इसलिए ये इतना लो ग्राफिक तो मुझे खेलना पड़ रहा है और ये फ्रेम अटक रहा है। Sebastian, अगर मैंने अपने जीपीयू भी अपग्रेड कर लिया ना, तो अब तो Sneaking in the जैसे गॉड ऑफ restricted वॉर चले थे ना section जिस क्वालिटी में, again! बीजीएमआई जिस क्वालिटी में चलती है I स्क्रीन had पर, thought we वैसे were चलेगी through with this mischief. HDR में। Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you मैं अपना tell गेम me. इस टाइम 1080p रेजोल्यूशन पे रन कर रहा हूँ। You're a bright boy. Don't waste this. ना There वो was nobody else. ये मीडियम से भी alone. कम है इस टाइम में, पता नहीं क्योंकि मैंने इसको मैक्स क्वालिटी पे थोड़ी देर पहले Oh, खेला है। Sebastian. स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम पे मैंने इसको What मैक्स क्वालिटी will पे your चेक करके uncle देखा, ये say? बहुत रियल दिखती है ये। लेकिन फिर मेरे को पता है कि स्ट्रीम जब मैं करूंगा तो मेरा सीपीयू का लोड वो खींचेगा, जीपीयू जो है गेम तो ये जीपीयू यूज़ करेगा ही और स्ट्रीम भी जीपीयू यूज़ करेगा, तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने रेजोल्यूशन इसका कम किया। और ये पता मैं दिखा सकता ना, कर तो कैसे दिखाऊं, ये देखो इस टाइम मेरी सेटिंग्स क्या है। ये देखो मैंने 1080p रेजोल्यूशन पे एंटी एलियासिंग ऑन किया हुआ है, अपस्केल मोड कुछ भी नहीं है, ये 4 नीचे ऑप्शंस हैं, मैंने इसको बंद कर रखा है, तब जाके ये 1080p रेजोल्यूशन पे दिखता है। अगर मैंने में से एक भी अप्लाई कर दो ना तो ये रेंडरिंग स्केल जो है उसको गिरा देता है, 67% कर देता है, देखो। तो इसीलिए मैंने इसको बंद कर रखा है। अदरवाइज इसके अंदर पॉसिबिलिटी देखो, रे ट्रेसिंग, फ्रेम जनरेशन, एनवीडिया लो लेटेंसी, वी सिंक, बाबा रे क्या ही क्या चीज़ें हैं, समझ रहे हो, मतलब तूफान है इस गेम के अंदर। इतना जो सबसे एक्सपेंसिव ग्राफिक कार्ड है ना 5090 और उसकी जो जितनी भी सीरीज़ है 50 सीरीज़ की, पूरे ग्राफिक कार्ड का ना एकदम जान निकाल सकता है ये गेम में, इतनी कैपेबिलिटी है। अल्ट्रा रियलिस्टिक दिख सकती है गेम अगर किसी के पास कैपेबिलिटी हो किसी जीपीयू की। बट मेरा बेचारा सा जीपीयू नन्ना मुन्ना सा 1060 6 GB का पुराना वाला 20 साल पुराना एडिशन क्या ही करेगा, तो चला रहे हैं जैसे तैसे काम।
अच्छा हाँ, उससे एक चीज़ मेरे को याद आई। मैंने अपने स्ट्रीम पे पैसे से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रखी अभी तक। हाँ, दूसरे वाली में तो कर रखी थी। उसमें से कॉपी करके ले आऊँ जरा, एक सेकंड यार, वो स्विच हो जाएगा। देखता हूँ, पीसी गेमिंग आईपैड मिनी 7 है ना वो। हाँ, जैसे ये जो है ना, इस यूपीआई को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। क्या पता कोई दिलदार व्यक्ति मुझे अमीर बना दे। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। पेस्ट डुप्लीकेट। ओह कितना बड़ा है भाई साहब, इतने इतना लालच नहीं बना, इतना लालच नहीं है भाई, छोटा सा ही चाहिए। यहाँ पर इसको साइड में लगा देते हैं इस प्रकार। इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, आई कमांड यू टू डोनेट मी। ये दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। वी विल बी लॉकिंग दिस ओवर हियर। अब ठीक है, पैसों की बातचीत हो गई। ओके ये म्यूजिक मैंने पहली बार सुना है। ये ऑफिशियल हैरी पॉटर सीरीज में से नहीं है। ये जो गिटार वगैरह बज रहा है, यहीं जाना है ना? हाँ यहीं जाने कह रहा है। और ये देखो कैसा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। मैं चाहूँ तो इस फ्रेम ड्रॉप को रोक सकता हूँ, बट क्वालिटी इतनी बेकार है उसकी। बस मुझे AMD FSR यूज़ करना है, उससे मोर देन 60 FPS आ जाएगा मेरा। 100 FPS तक भी मैं मिला सकता हूँ, बट दैट इज़ बैड। दिखने में मज़ा नहीं आएगा, एक्सट्रीमली ब्लरी हो जाता है आसपास का ऑब्जेक्ट। किसी को अगर सिर्फ एक्सप्लोर करना हो ना कि गेम मतलब क्या क्या स्टोरी लाइन है या फिर क्या सीन है, ही कैन यूज़ AMD FSR। अब क्या करना है? अच्छा, ओ वाओ, ये क्या टूटा? हे अंकल, You प्रोफेसर। cannot be serious. Goblins working with rookwood? हाँ जी। Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? यही घुमाते रहो, ऐसा ही It's है। inconceivable. It's... Ah, Fig. This game is A beautiful. visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Restriction section? प्रतिबंधित खंड में चले गए हो। वहां पर उसने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा। उस मंत्र का नाम था That's... मेरे भी मेमोरीज मिटाई गई है। You accessed the restricted section? Yes. But how? Thinking on it, Tom perhaps Riddle it's मदद best करी you थी। spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh, you have the book? इसमें होक्रक्स मंत्र लिखा हुआ है क्या? आत्मा के 7 टुकड़े कैसे करते हैं? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. टॉम रिडल ले गया। It appears someone has got to the book before us. Yes. Still, I will इसके need पेजेस time का to वो study what remains. डोरमामू को बुलाने का मंत्र भी तो हो Perhaps it can सकता still है। salvage something डॉक्टर स्ट्रेंज ले गया useful. होगा। It may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. इसमें एक मैजिक है ना, रिपेयरो नाम से, उससे बुक ठीक हो जाएगी I ना। saw करो। 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death.
जादू मंत्री से बात करेंगे? ऑफ I कोर्स, understand. लेट्स गो। I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. इसका जो But you'll दाढ़ी want to का जो pay है वो attention in स्टाइल है, herbology ये and मंकी किंग की potions. तरह नहीं है। There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. अच्छा है, You've बढ़िया done लग रहा है देखने exceptionally में। well. I look forward to seeing all that you've इसकी आंखें accomplished when I बिल्कुल return. कैप्टन अमेरिका जैसी है, नीली नीली। Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. एक क्वेस्ट कंप्लीट हुआ इसमें। वो चैलेंज था कौन सा जो कंप्लीट हो गया? यहाँ पर कुछ तो है, वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, in Lower Hogsfield as soon as possible. लेटर ऐसे I would पढ़ते like हैं। to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. अच्छा, मैं पैसे ओपन करता हूँ। मतलब ये जब चाहेगा मुझसे तभी मैं ओपन कर सकता हूँ, अदरवाइज तो मैं ओपन नहीं करने। इतना बड़ा मैप है इसका भी? नो वे। ओहो, ये तो बड़ा ही सही सा लग रहा है। गॉड ऑफ वॉर वाली याद दिलाती सर। उसमें भी कुछ ऐसा ही मैप है, हालांकि इसमें दिखाने का तरीका काफी अच्छा है। ये मैं कहाँ गया? अरे जाना था ना। and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. ये क्वेस्ट है। सो ओके, ऐसे इसको ट्रैक करना है। बटन्स के बीच में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक्चुअल में इसमें ABCD नहीं लिखा ना, इसमें लिखा हुआ है XYZ लिखा हुआ है, और प्लस और एंगल ट्रायंगल स्टेप से बने हुए हैं। ABCD बड़ा मुश्किल है। Revelio. और चलो शुक्र है कुछ बटन्स में नहीं है, Imagine how inconvenient travel was. याद कर लिए हैं कुछ बटन। नहीं तो मुझे पहले पता भी नहीं था भागते कैसे हैं। उसमें कंट्रोलर होता है, उसके अगर बीच में टिप को दबाओगे ना, बीच में प्रेस करके, तो वो भागता है। और मेरे को पहले पता ही नहीं था कि ये भी कोई बटन होता है कंट्रोलर के बीच में। एनालॉग्स को अगर आप नीचे प्रेस करते हो तो वो भी एक बटन है, नॉट जस्ट रोटेशन। is Xbox controller, yes. Oh wow, yes. एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्टेप पे बढ़ाते हैं, हो जाएगा। FSR 1 पे करना है बस, और इसकी जो क्वालिटी को है उसको करना होगा परफॉर्मेंस पे, बस इतना करना है। अब देखो भाई, स्ट्रीम लैग हो रही, ग्राफिक्स लो करो। नहीं स्ट्रीम लैग नहीं हो रही, मेरा गेम लैग हो रहा है। अब देखो भाई साहब, अब देखो कितना 60 FPS से चल रहा है बढ़िया सा। FPS तो कांस्टेंट हो गया, बट क्वालिटी आई डोंट लाइक इट। आ जाना है, दिख मतलब दिखने लायक है, बट मुझे मजा आता है ना, वो नहीं आ रहा। Amit Takar is already studying for hours. No wonder he doesn't. कहाँ जाना है भाई?
बता देगा, सही बताओ। पता ही नहीं चला ना, तो सही वापस पलट गया। वापस ले लिया उसको। ना लो, हाँ, कुछ और। उसे कुछ बताया होगा, हाँ जी। जिसमें अपन कर रहा है, वही है। जहाँ शुगर ली, नहीं शुगर। कितना है? We could have worked together. How amazing to have everyone back together again. This ill built enchantment established the most cultivated in Hogwarts is knowledge. The first house is no longer the verse translated like the fountain bomb. Now then, today we'll create ourselves a little Shiva known as a man rape. Thank you. Let's see if we can make our five a bit more comfortable, shall we? First, let's check our ears. Now, everyone, rip the hand and get a hard top. Libby, it's not actually a new pot. I have the file. The sludge enveloped with one dirty blanket, putting the rape nice as मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। बाहर आ गया I'm very sorry about that. You should have shown my face. Okay, okay. So let's go, everyone. Now for our next house, we'll be Disney, her body tables. I wonder if hippogriffs like not. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. अभी आ रहा है साउंड? वही तो मैंने क्वालिटी अब कम कर दी इसकी। Done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion.
I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी टाइमलाइन की है। इसमें जो हैरी पॉटर की मूवी है ना, इसमें ये जो प्रोफेसर होती है वो बूढ़ी सी होती है। Nice to meet you. I'm Leander. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Hotel B. ठीक है? And open the door. Awesome. Then tap LB to use the assign tool. अच्छा, ऐसे करना है क्या? ठीक है। अब attack the target with dummy with cabbage. अच्छा, इस cabbage से मुझे कुछ assign वो लेना पड़ेगा। I got it. Look at that! They can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid boomer tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful पहले से outside ज़्यादा of the स्मूथ लग रहा है। मुझे लग रहा है greenhouse. Nothing wrong with a 50-40 bit से of चल ही रहा backup, है। even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if जब तक ये necessary. हॉगवर्ट्स के अंदर है Dogweed तब तक Death कोई Camp दिक्कत has more of them if you're ठीक keen. चल रहा था वो। Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the बाद में garden. कलेश चालू होता You है। get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. कोई नहीं, 2 घंटे की I'll see you back स्ट्रीम in करेंगे। class. तो मैं सोच रहा हूँ पता है इस गेम को मुझे ना स्किप करना चाहिए, क्योंकि इस गेम को खेलने का एक्चुअल मजा स्ट्रीम करने का तब भी है। And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Good, as it seems to be quite prepared. Oh, I knew this was going to continue. Magic plants have so much to offer. I needed them more. Glad. Her body is a bounty subject. Take your garden. It will taste you. But I suppose that's anything. To come over to chat sometime. I so enjoy chatting with new students. All those memories have been fetching in new pots and costing my Thanksgiving.
Handy resource indeed, your field guide. इसके भागना भी अब काफी स्मूथ हो गया और लेकिन इस जगह पर भी है। Shouldn't there be orders or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Oceans is studying hazardous subjects at school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by bringing a vegan weld potion. Mr. Carr can tell us why this particular potion might come in handy. Yes, Professor Sharp. The weld potion can be used to sterilize and heal a variety of injuries. Inhale some injuries. Oh. Points for Ravenclaw. Before... Today's class is completed. Each of you will have brewed a wig and weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. काढ़ा बना रहे हैं। I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Should you chop the dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. My parents considered keeping me home for... Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable.
your potion stations organized and free of clutter. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragonstar! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a In addition, pay particular attention in herbology. The plants you know. Now, I recommend that you... That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Don't fret if you run out of ingredients. I simply roll with what I need. I'm currently not tracking anything. Really? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions.
I hate to see a creature get put down like that. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. I think there What were are you up to doxy eggs now? as well. This cannot possibly be. Oh, is that some? It has to be. It's good. It is good to see you, my friend. Hello, how are you? I hope you recovered from rather unfortunate past week. I'm bad, but I remember about you, my friend. With Ranrock and Rookwood, how do you? I'm right, Simon. We did not speak about time, but I hope now you might tell me why they were looking for you. They want something that affects the Gringotts. Where do you have been guards? Just for holes. In fact, it's why I wait sorting ceremony. The book brought there with the parish. What on earth? There's one more thing. It's very different. Professor Figgs have a recognition of powerful form of ancient magic. That magic you used to try to control the Hogsmeade. I think so. I'm still learning. But I can see traces of it. And of course, magic I can't always explain. I know that's a lot to absorb. Sis, I know we have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Hollow are a threat to both of us, to all of us. Tonight I want to speak to you. I realized something that day last week. Use this courage to natural. As someone I was intimidated by a big time Rookwood and Hollow. Both of you have inspired me to take exert my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Hollow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student.
I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupid man! Let's get this over with, shall we? You will pay for that. I'll watch the light go out of your eyes. Perhaps some we could help them up. Anywhere with you. Going up! You'll take this Rookwood himself. Amateur. Into the clouds, this one. Just warning. Aha! Back for more. You're going to regret that. You little brat! You've made a grave mistake. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted.
You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? This Revelio. is uncharted territory. I am curious about these pyres. The flames make the pile sink. Dear, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall